Very good morning, my dear student. This is Rahul Garg, your science teacher, and today we will discuss our chapter second, that is heat and temperature. Why we are discussing the heat and temperature? स्टूडेंट, आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनमें कभी कभी बीच में जो ट्रैक होता है उसके स्पेस छोड़ दिया जाता है, या फिर हमारी जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं वो थोड़ा लूज जो है लूजली टाइट की जाती है। ठीक है, वो कंप्लीट टाइट नहीं की जाती, लूज छोड़ दी जाती हैं। और या फिर अगर बात करें हमारे आईफल टावर की, जो समर्स के टाइम पे क्या होता है 6 इंच टॉलर होता है। तो इन सभी चीज़ के, इन सभी जो क्वेश्चंस है इनका रीज़न क्या है कि वाई वी लीव द गैप बिटवीन द रेलवे ट्रैक्स एंड वाई द इलेक्ट्रिक वायर्स are not lightly loosely, and why the Eiffel Tower's height increases in summer. To find out the reason of this, we will discuss heat and temperature. So let's start heat and temperature. Now, what are the now topic that we will discuss in heat and temperature are measurement of temperature and heat. First of all, we will discuss temperature measurement. Means how we will measure the temperature or heat and what is the difference between heat and temperature. Then we will discuss the laboratory equipments that we will use to measure temperature and heat. Means which equipment we will use to measure the temperature and heat. Then we will discuss what is the difference between heat and temperature and the types of thermometer that we will use in our daily life and in our industrial life. And then we will use the concept, then we will read the concept of heat transfer and heat loss. So first, the difference between heat and temperature. So what is hot and cold? The hotness or coldness of an object depends on the flow of heat. Means how the, from where the heat is flowing to which the destination. Means अगर ये मेरा object है, if this is my hot and this is cold, then how I will find that this is hot and this is cold? This is the concept of relativity. Means if the temperature of this is higher than this, then this is hot, otherwise this is cold. Means when we will touch an object, then heat flows from one object to our body. When we touch an object, heat flow from the object to our body, it feels hot. And अगर ये क्या हो कि उल्टा हो जाए, बॉडी से हीट हमारी बॉडी से ऑब्जेक्ट की तरफ अगर हीट मूव करती है तो ये क्या हो जाएगा, हॉट फील होगा। मीन्स ये वाइस वर्सा है कि आप दो बॉडीज को कंपेयर कर रहे हो, एक हमारी अपनी बॉडी और दूसरी जो बॉडी है दैट इज ऑब्जेक्ट। अगर बॉडी से ऑब्जेक्ट की तरफ हीट मूव कर रही है, बॉडी से ऑब्जेक्ट की तरफ हीट मूव कर रही है, देन आवर बॉडी इज हॉट। अगर ऑब्जेक्ट से बॉडी की तरफ हीट मूव कर रही है, देन ऑब्जेक्ट इज हॉट। ये जो कंसेप्ट है दैट इज हॉट एंड कोल्ड। मीन्स जो हमारी सेंस ऑफ टच है ये सिर्फ हमें क्या बता रही है कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। इट कैन नॉट टेल अस दैट हाउ मच इट इज हॉट और कोल्ड। हम ये नहीं बता सकते कि ये कितना गर्म है या ठंडा है, सिर्फ ये हमें ये पता चल जाएगा कि ये हॉट है या फिर कोल्ड। सो टू कंपेयर द हॉटनेस एंड कोल्डनेस, we should know the temperature of object. While touching, using the sense of touch, we can only find that the body is hot or cold. To find the coldness or hotness, we will find temperature of the object. Now, what is the meaning of temperature? Temperature is the degree of hotness or coldness. Temperature is the degree of hotness and coldness of an object. An object feels hot when its temperature is higher than our body. Means अगर हमारी बॉडी के जो बॉडी टेम्परेचर है उससे ज़्यादा है उसका टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का, तो वो क्या होगा, हमें हॉट में फील होगा, अदरवाइज दैट विल बी फील्ड कोल्ड. What is the unit? To measure the temperature, the SI unit is Kelvin and it is represented by capital K.
and the common unit we will use is degree Celsius. This is SI unit, standard unit, and degree Celsius is commonly we will use in our daily life. And the third unit that we will use is degree Fahrenheit. And to measure the temperature, the instrument that we will use is thermometers. To measure temperature, we use thermometer. So first, temperature is degree of hotness or coldness. It is the degree of hotness or coldness of an object. An object feels hot when its temperature is higher than our body, or if its temperature is lower than our body, then it is cold. To measure temperature, we use three units, that is Kelvin and degree Celsius, and the third one is degree Fahrenheit. Now, how we will find the conversion formula between temperature units? Means if we want to convert degree Celsius into degree Fahrenheit, then the formula is degree Fahrenheit equals 9 divided by 5 into degree Celsius temperature, that is given, plus 32. This is our first formula to convert degree Celsius into degree Fahrenheit. Suppose we have given 45 degrees Celsius, and we have to convert this 45 degrees Celsius into Fahrenheit. Then we will substitute the value of degree Celsius in this formula, like 9 divided by 5 into degree Celsius, that is 45, and plus 32. This will become 113 Fahrenheit. On solving, this will become 113 degree Fahrenheit. And to convert degree Fahrenheit to degree Celsius, degree Fahrenheit to degree Celsius, then our formula is degree Celsius equals 5 divided by 9 into degree Fahrenheit minus 32. This is our second formula, that is degree Celsius equals 5 divided by 9 into degree Fahrenheit minus 32. And the third is to convert degree Celsius into Kelvin. How we will convert degree Celsius into Kelvin? Then this is very simple. Kelvin equals degree Celsius plus 273. Suppose we have given 100 degrees Celsius, then to convert into Kelvin, we will just substitute the value here, 100 degrees Celsius plus 273, then this will become 373 Kelvin. This is 373 Kelvin, means 100 degrees Celsius equals 373 Kelvin. Now the fourth one is to convert Kelvin into degree Celsius. To convert Kelvin into degree Celsius, we will use degree Celsius equals Kelvin minus 273. अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस तो प्लस होगा, अदरवाइज माइनस. दिस इज कन्वर्जन फॉर्मूला बिटवीन टेम्परेचर यूनिट्स. And this is types of thermometer that we will discuss in tomorrow. We have different kinds of thermometer. And student, आपको क्या करना है कि मर्करी थर्मामीटर और एक डिजिटल थर्मामीटर देखना है कि कैसा होता है. मर्करी थर्मामीटर जो आप घर पे यूज करते हैं दैट इज मर्करी थर्मामीटर, और आजकल जो यूज करने लगे दैट इज द डिजिटल थर्मामीटर जिसमें नंबरिंग सिस्टम होता है. और जो पहले यूज किया जाता है जिसमें हल्की सी एक लाइन दिखती है दैट इज मर्करी थर्मामीटर. दैट वी विल डिस्कस टुमारो. Okay student, thank you, bye bye.